Warm greetings, everyone. Welcome to Kritya International Poetry Festival 2021. We concluded a wonderful inaugural session with amazing poetry recited by our eminent guests. We are now commencing our second session for the day. This session has a panel of diverse poets with significant messages embellishing their poems. Let me invite our guests now. First, we have Ghassan Alkhunaizi joining us from Saudi Arabia. Next, we have Medha Singh from India. Then we have Sahar Aldamsani here with us from Iran. Next, we have Vandana Tete ji joining us from India. And finally, we have Miraglia joining us from Italy. We also have Mita ji and Kritya's Festival Director Rati Saxena ji joining us. On behalf of Kritya, I welcome all of you. Before we begin, I request Rati Saxena ji to say a few words. Welcome to you all, my friends, in Kritya 2021. This is the 15th International Poetry Festival. We have started Kritya in 2005 with certain ideas that there should be respect to all languages, the languages of India and languages of the world. It was the nomadic poetry festival which run in a different cities of states of India. Like we had in Kerala, then we have gone to Jammu and Kashmir, then we have gone to Punjab, Mysore, then Nagpur, Wardha, and then Kerala. It is also a poetic therapy festival where we do not sit on the stage and invite the hi-fi audience. We go to old age home, we go to orphanage, we go to villagers, we go to schools, colleges, and even hospitals to talk to patients and make them feel comfortable. And we also go to prisons to talk to prisoners. So it is a different kind of poetry festival, which is just using poetry as a therapy, as a chant, as a mantra. This is in pandemic time. Kritya is doing its job very perfectly. That we had 10 days poetry festival international. Then we have 3 days poetry festival for Central America. Then we had 75 talks of in a different area like art, music, dance, even politics and media kind of things, and many even historical events also. So that is how we are always active. Now we are again coming because we are waiting for third wave of pandemic. So before that, we are doing a kind of therapy for us to say this word. And this festival is just for peace of mind, peace for this earth, and peace for this universe. So welcome to you all, friends. Over to Vandana Vaishnavi. Thank you, Rati ji. It was very beautiful what you said. Let us begin the session now. This session is special. It is a tribute to one of the revolutionary poets of India, Shankh Gosh. Shankh Gosh is an eminent Bengali Indian poet and critic. He is regarded as one of the most prolific writers in Bengali. Ghosh was one of the Panch Pandavas, or one of the 5 most important poets, who gave a new identity to Bengali literary world. In 2011, he was the recipient of one of the most prestigious awards of India, the Padma Bhushan, awarded to him by the Government of India for his contributions in the field of literature. He was also honored with the highest awards in literature in India, which are the Sahitya Academy Awards, the Gyanpith, the Rabindra Puraskar, Vishwa Bharati's famed Desikottam, the Narsingh Das Puraskar, and many others. Shankh Gosh's works have been translated to English, Hindi, Marathi, and many other regional languages in India. He has illuminated a path for all of us with his words. In April 2021, we lost this great pioneer of literature to COVID. In his honor and remembrance of Shankh Gosh,
we had prepared a short video. I would request Rati ma'am to now play it for our viewers. একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি তোমার জন্য গলির কোণে, ভাবি আমার মুখ দেখাবো, মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে। একটা দুটো সহজ কথা বলবো ভাবি চোখের আড়ে, জৌলুসে তা ঝলসে ওঠে বিজ্ঞাপনে রংবাহারে। কে কাকে ঠিক কেমন দেখে বুঝতে পারা শক্ত খুবই। হারে আমার বাড়িয়ে বলা, হারে আমার জন্মভূমি, বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত, নিয়ন আলোয় পণ্য হলো। Thank you. That was a beautiful video. Now I will call upon poet Mita Dasji, who will be reading his poems in Bengali and Hindi. Mita ji is a close friend of Shankh Gosh, and she has translated his poems from Bengali to Hindi. Over to you, Mita ji. Thank you, Vaishnavi. Good evening, friends. शंख घोष को याद करते हुए मैं चंद शब्द कहकर अपनी कविताएं पढ़ूंगी। अपनी नहीं, अपने अनुवाद पढ़ूंगी शंख घोष की कविताएं। बांग्ला साहित्य का एक युग अचानक स्तब्ध हो गया। कोरोना महामारी निगल गई एक मूर्धन्य साहित्यकार को। वे बांग्ला के एक नक्षत्र के समान थे, जिसके टूटने पर पूरी साहित्य बिरादरी तख्ती में है। शंख घोष के रक्त में विप्लव इस तरह घुल मिल गया था कि उनकी रचनाओं से अलग करने का मतलब उनकी आत्मा को छीन लेने जैसा ही था। उनकी रचनाएं सिर्फ नवीन को ही नहीं, वरिष्ठ साहित्यकारों को भी प्रेरणा देते हैं। सबको उनके साहित्य से एक ऊर्जा मिलती थी। मुझे भी ऊर्जा मिली, इसलिए मैं उनसे फोन पर सबसे पहले कहा कि मैं आपकी कविताएं अनुदित करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे स्वीकृति दी और मैंने उनकी कविताएं अनुदित की। मैं पहले बांग्ला में पढ़ूंगी, फिर उसी कविता को हिंदी में पढ़ूंगी। पहली कविता पाथर। पाथर निजेई आमी दिन दिन तुलेছি বুকে, পাথর নিজেই আমি দিনে দিনে তুলেছি এই বুকে, আজ আর নামাতে পারি না। আজ অভিশাপ দিই বলি ভুলে নেমে যাও, এবার প্রথম থেকে চাই দাঁড়াবার মতো জায়গা, দাঁড়ায় যেখানে মানুষ। মাথায় উধাও দিন, হাতের কোটরে লিপ্ত রাত, কিভাবে বা আশা করে মন বুঝে নেবে অন্য লোকে। সমস্ত শরীর জুড়ে নবীনতা যোগেনি কখনো, মুহূর্ত মুহূর্ত শুধু জন্মহীন মহাশূন্যে ঘেরা। কার পূজা ছিল এতদিন? একা হতো একটা হও, একা হও, একা হও, একা হও। আজ খুব নিচু করে বলি, তুমি নেমে যা পাথর, তুই নেমে যা। পাথর দেবতা ভেবে বুকে তুলেছিলাম, এখন আমি তোর সব কথা জানি। इसी का मैं बांग्ला अनुवाद पढ़ रही हूँ। हिंदी। पत्थर। पत्थर दिन पर दिन उठाए हैं मैंने सीने पर आज उन्हें उतार नहीं सकता। आज अभिशाप देता हूँ, कहूँ सब भूल थी, उतर जा, फिर से शुरू करना चाहता हूँ। उठकर खड़े होना जिस तरह से उठ खड़ा होता है मनुष्य। दिमाग से गायब है दिन और हाथों के कोटर में लिप्त है रात। कैसे आशा कर लेते हो कि बूझ ही लेंगे तुम्हारा मन। पूरे शरीर के अस्तित्व को घेर नवीनता कभी नहीं जागी। पल पल सिर्फ जन्महीन महाशून्य से घिरा रहा,
पर यह किसकी थी पूजा इतने दिनों तक। हो जाओ अब अकेले, मेरे अकेले, आज बेहद धीमे स्वर में कह रहा हूँ, तू उतर जा, तू उतर जा। पत्थर देवता समझकर उठाया था सीने में, पर अब मुझे तेरी सारी बातें पता है। अब दूसरी कविता, पुतुल नाच। এ কি তবে ঠিক হলো যে যে 10 আঙ্গুলের সুতোয় তুমি ঝুলিয়ে নেবে আমায়, আর আমাকে গাইতে হবে হুকুম মতো গান। এই কি তবে ঠিক হলো যে বৃষ্টি ভেজা রথের মেলায় সবার সামনে বলবে ডেকে, এসো মরণ কূপে কাঁপাও, আমার ছিল পায়ে পায়ে মুক্তি, আমার সহজ যাওয়া এ গলি ও গলি, আমার ছিল পথশ্রমের নিশান তোলা শহরতলি উত্তর দক্ষিণে, আমার চলাফেরা আমার নিজস্ব, তাই কেউ কখনো নেয়নি আমায় কিনে। এখন সময় তুমি আবিল হাত বাড়িয়ে যা পাও স্বাধীনতায় দিচ্ছ গোপন টান। এই কি তবে ঠিক হলো যে আমার মুখেও জাগিয়ে দেবে आदिमतार नग्न प्रतिमान। इसका मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ। कठपुतली नाच। तब क्या निश्चित हो गया कि 10 अंगुलियों से तुम धागों के सहारे मुझे लटकाओगे और मुझे गाना पड़ेगा हुक्म अनुसार गीत। तब क्या यह निश्चित हो गया कि बरसते पानी में भी रथ के मेले में तुम सबके सामने बुलाओगे, आओ मौत के कुएं में कूद जाओ। मेरे कदम कदम में थी मुक्ति और सहज ही थी मेरी आवाजाही, पर गली से उस गली मेरा चलना था मेरा निजी, इसलिए किसी ने मुझे कभी नहीं लिया खरीद। ऐसे वक्त में तुम दूषित हाथ बढ़ाकर जो चाहो वह स्वाधीनता से खींच रहे हो अदृश्य से। तब क्या यह निश्चित हो गया कि मेरे मुंह में ठूंस दोगे आधीनता व नग्नता के प्रतिमान। एक और कविता शंख घोष की, ক্রমাগত। এইভাবে হাত থেকে ক্রমাগত কেউ মারে কেউ মার খায়, ভেতরে সবাই খুব স্বাভাবিক কথা বলে, জ্ঞান দান করে। এইদিকে ওইদিকে 3 4 5 দিকে টেনে নেয় গোপনে আখড়ায়, কিছু বা গলির কোণে, কিছু আসফল্ট রাজপথে সোনার ছেলেরা ছারকার, অল্প 2 4 জন বাকি থাকি যারা তেল দেয় নিজস্ব চরখায়, মাঝে মাঝে খড়খড়ি তুলে দেখে নেয় বিপ্লব এসেছে কত দূর। এইভাবে ক্রমাগত, এইভাবে এইভাবে ক্রমাগত। अब मैं शंख घोष की कविता पढ़ रही हूँ हिंदी में। बाहरी हो, बाहरी हो, मेरी बात क्या तुम नहीं कहना चाहते, जरूर तुम बाहरी हो। ऊंची आवाज में लोग बातें करते हैं, ऊंची आवाज में लोग बातें करते हैं, तुम जान लो वे बाहरी हैं, तुम जान लो वे बाहरी हैं। गांव के कोने कोने में जो लोग हैं वे गांव के हैं, गांव के कोने कोने में जो हैं वे गांव के हैं, और जो खेतों खलिहानों में हैं वे बाहरी हैं, जो खेतों और खलिहानों में हैं वे बाहरी हैं। मृत मनुष्यों के मुख से कपड़े मत सरकाओ, मृत मनुष्यों के मुख से कपड़े मत सरकाओ, तो वे बाहरी हैं। मैदान से उस मैदान तक जितनी फसलें हैं आज वह सब बाहरी हैं। छावन के ऊपर झुकता हुआ चांद
बहुत दूर से वह भी बाहरी है। वर्षा के फलक पर विष्ट पड़कर काले नकाब के पीछे सभी बाहरी हैं। बाहरी लोग ही आकर समझ लेते हैं कि कौन बाहरी है। इसका बांग्ला पढ़ रही हूं। বহিরাগত। আমরা কথা কি বলতে চাও না? নিশ্চিত তুমি বহিরাগত। আমার কথা কি বলতে চাও না? নিশ্চিত তুমি বহিরাগত। উঁচু স্বর তুলে কথা বলে যারা, জেনে নাও তারা বহিরাগত। গায়ে কোণে কোণে গায়ের মানুষ, খেতে বা খামারে সবাই বহিরাগত। মাঠে মাঠে ধরে যতটুকু ফসল সবই এখন বহিরাগত। মরা মানুষের মুখাচ্ছাদন সরিয়ে নাও, সে তো বহিরাগত। চালার উপর ঝুঁকে পড়া চাঁদ বহুদূর থেকে বহিরাগত। বর্ষার ফলকে বিষ মেখে নিয়ে কালো মুখোশের আড়ালে যত বহিরাগতরা এসে ঠিক বুঝে নেবে कि कारा बहिरागत। अब मैं इस कविता का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने के लिए वैष्णवी को कहूंगी और इसका ट्रांसलेशन किया है बानी चक्रवर्ती ने। Thank you, Mita ji. That was a wonderful recitation of Shankh Ghosh's poems. You have recited in Bengali and in Hindi the poem Outsiders. Now I will read it in English. Are you not willing to talk about me? Surely, are you not willing to talk about me? You are an outsider. Those who talk loudly, you know, they are outsiders. Resident villagers are our own, but those in the paddy fields, they are outsiders. Don't unveil the face of a dead man. He is an outsider. All the crops of that land that grow now, today they are outsiders. The moon that shines every night behind the hut from a far distance, that is an outsider. Indeed, with poisoned spears and masked faces, outsiders can recognize who the outsiders are. So Thank the you. poem ends there. Shankh Gosh was indeed a powerful poet. Thank you, Mita ji, again. So we will now continue on with the session. Now we have our poet from Saudi, Ghassan Alkhunaizi, who will be reading his poems in Arabic. Ghassan is a Saudi poet and translator. He started his literary journey by contributing translations, commentaries, and poems to literary supplements in local newspapers. His artistic style belongs to the 90s generation of poets who introduced a modernistic and experimental approach to poetry in Saudi. His poems and translations have appeared in several national and pan-Arabic literary periodicals and newspapers. He has published 2 poetry books and a book of translated poems by American poet Josh Ashbery. His poems have also been translated and published in English, Spanish, and French. I welcome you on stage, Ghassan. Over to you. Rati ma'am, you may have to unmute him. Yes. And to our viewers, wherever they are. I know it's a ritual to say thank you, but I think it's a must here to thank our dear poet Rati Saxena-ji for inviting me to participate in this recital of this prestigious forum festival, and with such wonderful and amazing, prestigious poets, our colleagues here. So thanks to everyone, and without further ado, I'll start my readings. The first text or poem is called Little Utterance in English, in Arabic, كلام قليل. كلام قليل بين 2 أو 3 يكون الكلام القليل كثيرا. الطاولة تنوء تحت ثقل الكلام، لولا أنك كل ساعة بل كل وهلة يستغرقها حلم يقظة تمسحين الكلام أو حطامه، تنفضينه عن الجانبين بمنديلك ذي الأهداب. To you, Mita, for translation.
जरा बहुत बातचीत 2 या 3 लोगों के बीच हुई जरा बहुत बातचीत से भरपूर होती है। तुमसे तो नहीं, लेकिन बातचीत से लज जाती है मेज। तुम चाहे दोनों किनारों से पोंछ दो या फिर झाड़ दो मेरे लेसदार रुमाल से। हर पल, हर घड़ी दीवा स्वप्न अपना दे ले ही लेता है। Thank you. The second poem is a pantom style, which is basically a Malayo style poetry. It's from folk arts in Malayo, and it was basically used by European poets in the 19th and 20th century. And it's interesting because we are repeating each couplet twice in an alternate and interlocking way. So we're going to be repeat some of the, or actually all of the stanza, or all the lines in the stanza will be repeated. And I would like here to thank Ratiji for her translation and patience to translate such a, I know, awkward a little bit poem possibly. لا جديد إلا ما نسي. اليوم الذي هو الأمس لكنه آفل وأقل وضوحا. نستيقظ في عراء نسميه ضوء النهار، وقد دفعنا على حين غرة خارج أحلامنا لحظة تأوجها. نفز من النوم وقد دفحتنا هبة أخرى من الهواء اليباس لحزننا الذي لا يتوقف، أو انتزعنا من ماء فرح كمطر في موسم الاعتدال. نستيقظ في عراء نسميه ضوء النهار، وقد دفعنا على حين غرة خارج أحلامنا لحظة تأوجها، ووهبنا ذلك القدر المتوازن من الذكرى ومن السلوان، بما يكفي لنقول أن لا جديد إلا ما نسي، أو انتزعنا من ماء فرح كمطر في موسم الاعتدال. فنتساءل في القرارة من دواخلنا إذا ما كانت الآمال قد حققت في الحلم الذي هو نحن هذا اليوم، ووهبنا ذلك القدر المتوازن من الذكرى ومن السلوان، بما يكفي لنقول أن لا جديد إلا ما نسي. مهب حزننا كان جدرانه ليلة البارحة قد هرمت قليلا وتلونت بضوء بلاد أخرى. فنتساءل في القرارة من دواخلنا إذا ما كانت الآمال قد حققت في الحلم الذي هو نحن هذا اليوم، لكن هذا الصباح يراوغ اللحظات من يومنا هذا حول ما ننسى وما نتذكر. مهب حزننا كانت جدرانه ليلة البارحة قد هرمت قليلا وتلونت بضوء بلاد أخرى، والمرايا التي فيه لوحات شخصية للأحباب عينهم إنما بإيماءات جديدة نحو البعيد، لكن هذا الصباح يراوغ اللحظات من يومنا هذا حول ما ننسى وما نتذكر. فلا ندري أكانوا قادمين من حلم البارحة أم إنهم على عزم الافتراق خطوة أخرى. والمرايا التي فيه لوحات شخصية للأحباب عينهم إنما بإيماءات جديدة نحو البعيد. نفز من النوم وقد لفحتنا هبة أخرى من الهواء اليباس لحزننا الذي لا يتوقف. فلا ندري أكانوا قادمين من حلم البارحة أم أنهم قد على عزم الافتراق خطوة أخرى. اليوم الذي هو الأمس ولكنه آفل وأقل وضوحا. Go ahead for translation. Mita ji. Who is reading translation? Mita or Vaishnavi? I think Vaishnavi, you're reading in English. No, now it is Mita ji, and after Okay. that I will read. Okay, fine. अनम्यूट कीजिए। थैंक यू घसान जी, आपकी
कविताओं का ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद प्रतीज सक्सेना जी ने किया है हिंदी में, उसे मैं यहाँ पढ़ रही हूँ उनके तरफ से। सिवाय उसके जो भूल गया, सिवाय उसके जो भूल गया, आज के दिन बीता हुआ कल घिसा पिटा और कम नमूदार है। हम जागे उस अहाते में जिसे उजास कहा जाता है और सपनों के मरकज से बाहर फेंक दिए जाते हैं। नींद की तड़क से बाहर दुख की दूसरी बंजर हवा से दागे जाते हैं, या फिर खुश पानी से निकाले जाते हुए विषुव में बरसाते हैं। दूसरी है, सब उसी सीरीज की हैं। हम जागे उस अहाते में जिसे उजास कहा जाता है और सपनों के मरकज से बाहर फेंक दिए जाते हैं। यादों और भुलक्कड़पन में मिजान साधते हुए, ताकि कहा जा सके कुछ भी नया नहीं है सिवाय इसके कि जो भुला दिया गया, या विषुव के बारिश की तरह एक खुश पानी से निकाला गया, जिसे सवाल कर सकें कि क्या वास्तव में उम्मीदें पूरी हुई हैं सपनों में जो दिन भर में घटती हैं। इसका तीसरा पार्ट, यादों और भुलक्कड़पन में संतुलन साधते हुए, जिससे कहा जा सके कि कुछ भी नया नहीं है सिवाय उसके जो भुलाया गया। कल रात हमारी लालसाओं के झरोकों की हवा थोड़ी खराब हो गई थी और शालीन आकाश से रोशनी घुल गई। लेकिन सवाल यह है कि यदि लालसाएं सपनों में पूरी हो जाती हैं, तो यह क्या है जो दिन में होता है? फिर भी यह सुबह हमारे दिन के पलों को मिटा रही है, जो याद रख जाएं या फिर भूल जाएं। इसकी चौथी कड़ी, कल रात हमारी लालसाओं के झरोकों की थोड़ी हवा खराब हो गई और शालीन आकाश से रोशनी घुल गई। फिर भी आज की सुबह हमारे दिन के उन पलों से दूर जा रही है कि क्या भूले और क्या याद रखें। इसके शीशे इश्कियों के सभी हैं, लेकिन दूर से नए अंदाज को दिखाते हुए फिर भी ये सुबह हमारे दिन के उन पलों को टाल जाती है जो जताते हैं कि क्या भूलना है और क्या याद रखना है। मालूम नहीं कि बीती रात के सपने में लौटने की चाहना रखते हैं या फिर एकदम आगे आ जाते हैं। इसका फिफ्थ है, इसके शीशे इश्कियों के सभी हैं। इनके शीशे इश्कियों के सभी हैं, लेकिन दूर से नए अंदाज दिखाते हुए कि हम जागे उस आहते में जिसे उजास कहा जाता है और सपनों के मरकज से बाहर फेंक जाते हुए। मालूम नहीं कि बीती रात के सपने में लौटने की चाहना रखते हैं या फिर एक कदम आगे जाते हैं। आज का दिन बीता हुआ कल है घिसा पिटा और कम नमूदार। एक और है छोटी, नहीं यहीं तक है, खत्म हो गई। वैष्णवी खत्म। Thank you. My next poem is titled Echoing Mark Strand. Basically, this is a reconstruction of the American poet Mark Strand poem called Keeping Things Whole. It seems I have been translating things all over the place, and somehow it came into my work, and I discovered that after actually printing this in a book. So I have to retitle it, more or less.
على خطى مارك ستراند في إعادة تركيب الحفاظ على الأشياء كاملة. في الحقل أو في غياب الحقل حضور الفراغ، لا ترى عين الحاصد الرائي أو عين الطير. وعندما أمشي لا أقصد أي مكان، لا أذهب إلى أي مكان، فأنا حارس الأشجار الولي على العناصر. لكم كلكم أسباب الحركة، أنا لا أتحرك كي لا أزعزع نظام الأشياء. أنا الظل الذي في الحقول. Thank you, Ghassan. I will read the English translation for this now. Echoing Mark Strand's keeping things whole. In the field, or in the absence of the field, the presence of the void, the eyes of the onlookers are not seen, nor are the eyes of the birds. When I walk, I do not mean any place, I do not go anywhere, for I am the guardian of trees, the protector of elements. To all of you, there is reason for motion. I do not move, so as to not disrupt the scheme of things. I am the shadow in the fields. Thank you. Thank you. Last poem is called In Praise of Visual Poems. في مديح القصائد البصرية. في مديح القصائد البصرية. حري بك أن تأخذ هذا القول إلى آخره، الذي يكون أوله أيضا، لو إنك التفت بطوية أقل تقصدا للمعاني وأكثر شغفا بالكولاج الزخرفي الذي في الأسطر. المعاني المشاع التي استعرتها ومن ثم أطلقتها في هذا الأثير المحتدم، هذا الضجيج المشترك، قد عادت إليك مراوغة كالصدى إذ يرجع حاملا عدوى الأماكن التي مر بها، مطعونا بفساد طبعها، مقاربا العادي وما سهل تناوله كالنشيد. فما عرفنا هل ابتكرنا شيئا جديدا أم حملناه كما تحمل الأسفار، لا من استبصار يبزغ في سماء مشتركة، ولا من مفردة محدثة قد دخلت في حسبان ما يورد. بخلاف كل مظهر وبمثله في الوقت ذاته، النقوش في الكهف القديم للطفولة والتي بدت صماء ببدائيتها أحيانا وعبثية إزاء المقاصد الكبرى أحيانا كثيرة أخرى، ظلت منطلقا لخطوة أولى لسيرورة جديدة لا وجهة تدعيها، همها التواجد رفقة من طاف في أرجاء المكان متأملا تورق نبتة هنا واضمحلال أخرى هناك، متتبعا هذه الحكاية التي تقول كل شيء ولا تقول شيئا، ولكنها تترك طعما حلوا ومرا في الآن ذاته. فتراك في غنى عن سقط المعاني لهذه اللحظة، وإن كنت عائلا وفي مهب الهواء مثلك لحظة بدايتك. In praise of visual poems. It is indeed a beautiful poem. You ought to take this utterance to its end, which is its beginning as well. Had you approached it with an intent less concerning with meaning and more disposed towards the ornamental collage between the lines, the commonplace meaning that you borrowed, and then released back into this shared atmosphere, this bustling commotion has playfully come back to you like an echo, carrying the contagions of the place it went through, injured by the fraudulent nature of their characters, bringing what's familiar and easy to handle, like an anthem without realizing that we did not create something new, nor did the inside dawn upon a mutual landscape. Contrary to every appearance and at once similar to it are the etchings in the old cave of childhood, which are sometimes mute with its primitiveness, and other times indifferent towards the greater goals, yet continue to be the starting point for a new step,
and she has no purse with no destination to boast about. Its intention is to escort whoever stayed around the place, contemplating the ever growing lattices of the scene. In the moments between the blossoming of one plant and the weathering of another, following the story that says everything and doesn't say a thing, yet leaving a bittersweet taste at the same time. So you see yourself in no need for the obsolete meaning of this moment, though destitute and bare and open to the wind, as was the case when you started. Thank you, Ghassan. It was a pleasure to hear Arabic. It is such a beautiful language, and it was lovely to hear you. Next, I would like to call on stage Medha Singh. Medha is a poet, translator, and editor. She is the editor for Bofrois London and is on the editorial board for Freies Verlag Berlin. Her published works include Ectasis, a poetry collection, and I Will Bring My Time, Love Letters by S.H. Raza, a collection of love letters translated from French. She has been nominated for the TFA Awards twice. She has also delivered a TEDx talk on effective arguing. Her work has appeared widely in India, the UK, and the US in magazines such as The Wire, Rolling Stones, etc., and journals including the Sahitya Academy journal Contemporary Indian Poetry by Younger Indians. I welcome you on stage, Mita. Over to you. Am I audible? Hello? You are audible, Mita. You can go ahead. Okay. Thank you very much for having me. Thank you, Ratiji and Vaishnavi, for moderating this session, and to all the other poets, thank you in advance for all your attention. These poems that I'm about to read, they form a part of a much longer project that I'm currently working on, and they first appeared in Almost Island as Viscera. Here are some of the fragments. A wind flattened the cool wood one night. They arrived the next morning, men sprouting from soils past, a horde of buffaloes huddling, men marching without shirts, the last stampede that irons a civilization out, the sun still about. Plucking the charcoal emerald mess for its best, they carried half a trunk at rest on their muscular, bruised shoulders, carting brown carcasses to the workshop, singing all the way to their lorries. If they had heart, they'd chivvy up a hull, well shaved and carved to a stop. Think Kayabot's floor scrapers, men with no faces, no worry. They all glisten and shine and sweat and dignity, throwing one nude arm of wood, then another into the shaver, then cutter, pile after pile of door and table, door upon door exquisitely fit. In the future, a row of houses lines a sunlit street. Watch water rub rock to boulder, time cook wood to coal. Families and homes sutured together. One hears an old door creak against its hinges. Something is born between all that is known and not, when in its rasp one hears an infant's cry. Another fragment. The last toothless body fades to a point in the dark as it falls to the center of the earth, through the restless mouth of a volcano coughing sienna and amber. Everything disappearing. Time always pickling human faces to ceramic, ash. When forgiveness lifts the veil to the thing you have now come to call a true grief, you pray to return to the safe house of anger. Distraction, easy. My sister once held out her hands to catch someone's child, dropping off the high table at a restaurant into an unknown darkness. Just the two of us there, remembering our standard order 15 years ago. Somnolent breeze, clack and claver of childhood, outings with parents. A time frozen, gone. In a moment the flicker of an unfamiliar tenderness settling on her face. Pink sun reddening the contours of her hair. Words quick yet measured, the routine cooing of a toddler nearby now turning to a cry.
The undertow of what's real and isn't announcing itself. Divya extending her arms to arrest a small body in momentum, quicker than what the mind finds. The crack of a little skull about to interrupt the afternoon. It doesn't. A goddess, a witch, a messiah lets a boy grow into a brooding man. What women always do. History, biology, evolution, civilization. Who we are is present in the first impulse. All that spontaneity entwining us with friends and lovers, making us drop to our depths. All in the forward jerk of a hand as it catches the gaze of a child mid-mischief, mid-euphoria. Another fragment. You learnt the word eviscerate when you first glanced human viscera. A man dying but not all dead outside a hospital gate. Christ bleeding on the wall. Convulsing arm hanging off the stretcher like the bell of a curio clock from a past life. Wet head bisected by nature's knife. It's not a knife. Brains and bills flowering on. Blood eclipsing his brown face. Spittle dropping his robe. Body docked for Sharon. Contretemps at a construction site. He make disaster. A phrase you saw in your mind. Words sloping down in crimson. Doctors with their all-seeing eye, medical eye, weary eye. This one had just one eye. He said, such lives matter little. They declared couples dead where he works, lodged them as injuries by suicide in autopsy reports, when they well knew an entire village had conspired to hang them off a tree. This isn't Ithaca, love isn't free. Do you send a dwelling to the gallows for the death of two? Is being a good citizen also being good and true? Let the grief of a devastated conscience turn them into Christ, and like him, let them suffer, die. Another fragment. Paz once heard his own blood singing in its prison. I am not like him. Exhume this heart, exhaling effluvia. I smell like all of Asia. In the face of rage, it's best to offer a drink of water and be well reasoned. Erase that old phrase, name it sanguinous catastrophe, not treason. Night after night, dreams become madnesses corralled into a file. Pense au rêve où tu carried a dying Cossack on your back into the sun, defiled him to draw the winter out of his bones, wanting to hold Dostoevsky, warm his blood, make him your own. How many men will you love that are dead and gone? Keats's silken winds in the crook of your arm, fares flitting by, book under his arm. Oh, Medha, for whom? Seeing glimpses of their faces in the faces of alien men, for that secretly wanting to marry all of them, yet never telling one about the other. Turn one, then another into father, mother, and brother. Become the other. Another fragment. There is a world zipping itself up, a sky made of ice, the ground beneath your feet turning into water. Thales points to the nature of things. Body, mind, vegetable, flower all go into water. There is a leopard born in the savannah and a cathedral crumbling down in a sinner's dream. There is a woman lighting a candle on her mantle to prepare for a séance. A village is quietly going about its day, cattle and kine huddled together in the winter. A writer is noticing all his favorite stories have the sun in them, his room littered with paper. There is a crow perched on the back of a cow, grazing among the plastics behind a mandir. There is an empty nest brushed by the breeze on a deodar branch. There is dew that is turning to honey by the kiss of a Sumerian god. There is a row of gulmohars made of quartz lining a Delhi street. There is a man and there is a woman. In 5 minutes they will hold hands for the first time. There is a boy whose family has gone to work. He's shutting the windows against the storm. An Adivasi group dances in the forest in garb when no one is watching. A year is passing, and another, all at once, folded into a triangle, becoming a napkin.
Another fragment. Who was that man scavenging for orange peels in the garbage? Some mornings women looked through him, men gathering their children away from that mad fool, as they said. He saw a hole in the fabric of space and time, and no one quite believed him. What obsession does to us all is well known and shunned. But Dr. Physics here was a good professor, they said, family man. Handsome too, by a certain standard. What did he see peering through that hole? There is no coincidence, insaniyat and insanity are phonetically close. Another fragment. The destruction of art is also art. The sun's fingers combing the earth's gardens, and my sister thinking it's too much, and too much light is not the right kind. My newest and brightest friend is a yogini, out to release her vivid consciousness like an arrow to the point of knowing. It's Raza's Bindu, it's Hussein's half-made horses carrying me from dream to dream, until one turns up at my door. It was my mother's best friend in Canada who trained horses for the Olympics, sent them to me from an afterlife. In these dreams she's galloping into the distance, her auburn hair trailing as she hurtles away to a point in the dark. I think of her wrists, beads of sweat gathering on them. I draw a wrist and never finish the hand. Cacography, an old typewriter given to my mother by her father on my table. The first letter I ever loved, from Auntie Francesca who lived in Montreal, her horses near her still. Many years ago there was the year of no internet and night-long tempests, when my mother's family gathered, 4 brothers, 2 sisters, lay on the wet beach, strewn across a country rich with oil and no war, not yet, not knowing which house were to wear her curtains next. That's it. Thank you, everyone. Thank you, Mita. I feel like I just listened to a whole novel through this. It was very profound and deep. I will carry this with me and I will read over it again. Thank you again. Next, I would like to call on stage Sahar Aidamsani. Sahar is an Iranian poet who has written poetry in Persian, English, and German. The theme of her works are world peace, the defense of women's rights, kindness, and humanity. She is one of the few Iranian artists that has achieved recognition in many countries. She is the first Iranian who has won the Wild Sound Poetry Festival in 2019 for her poem Censorship, that focuses on women's rights. Sahar is also selected as the representative of the Global Photographic Union in Iran. Despite the many limitations for women in Iran, she has succeeded and is internationally recognized. I welcome you on stage, Sahar. Over to you. Hi everyone, thank you so much dear Rati for inviting me. Thank you so much dear Vaishnavi for introducing. I hope you are all well, and thanks everyone for listening to my poems. The first poem is called The Cold, and Persian is Sarma, from my first poetry book, Fifth Season of the Earth. سرما برف میبارد، سرما به قلب‌ها نفوذ کرده. وجدان‌ها به خواب زمستانی فرو رفته‌اند و انسانیت یخ زده است. دلخوش گرمای مهر یکدیگر نیز نیستیم، در عصری که جای قلب چرتکه در سینه می‌تپد. گویی زمین به سرمای ابدی محکوم شده، سرمای سخت، غریب و بیرو. تا چشمکار می‌کند سرد است و سفید، فرد به فرد از بین خواهیم رفت و این تاوان خودخواهی ماست و احساسات زیبایی که در خود کشتیم باید به خود بیاییم و خوبی‌ها را در خود زنده کنیم تا همه از این سرمای سخت نامهربانی به هلاکت نرسیدیم. And its English translation. The cold. Snow falls, the cold has penetrated the hearts.
The consciences have gone into hibernation, and humanity is frozen. They are not happy with the heat of each other's kindness, in the era when instead of heart, abacus beats in the chest. It is as if the earth is doomed to cold forever, extreme cold, strange and soulless. As far as the eye can see, it is cold and white. We will be ruined one by one. This is the atonement of our selfishness and the beautiful feeling we killed in ourselves. Let's come to our senses and revive the good in ourselves until we all run it from this extreme cold of unkindness. The second is from my second poetry book, and its name is Death Cries, and it's about peace, world peace. زمین می‌گرید. از دوستی با حیوانات می‌گوید، مردی که در پالتویی از پوست آهو فرو رفته. در بین تشویق مردمی که نمی‌دانند، او همین امروز صبح گربه‌ای را زیر گرفته. از دوستی با حیوانات، گورستانی پر از لکلک‌های مهاجر در معده و از انسانیت حق‌های پایمال شده بیشمار و از مهربانی چشمان خیس کودکان برجا مانده. و او همچنان در میان تشویق حضار از انسانیت می‌گوید، از مهربانی، از تمام چیزهایی که به دست فراموشی سپرده. انسان بیدار می شود. انسان بیدار می شود، زمین می گرید از خونهایی که ریخته خواهد شد. درخت به خود می لرزد. ماهی از ترس خود را به مرگ می زند و خورشید از نگرانی پشت ابرها پنهان می شود. انسان بیدار می شود. انسان بیدار می شود. انسان بیدار می شود. انسانیت اما نه. Hindi translation, please. हिंदी ट्रांसलेशन मैं पढ़ रही हूँ। शहर जी बहुत Yes, बहुत yes. अच्छी बहुत अच्छी कविताएं। मैं उनमें से जिनका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है वो मैं पढ़ रही हूँ। धरती का क्रंदन। वह कहता है बात मित्रता की। वह कहता है बात मित्रता की। पशुओं से उसने जो कोट पहन रखा है बना है हिरन की चमड़े से। वे नहीं जानते उन्होंने उसे उत्साहित किया है। आज सुबह ही उसने बिल्ली पर गाड़ी चढ़ा दी। जानवरों की दोस्ती से मानो उदर में पक्षियों का बन गया है कब्रगाह और इंसानियत के नाम पर कुचल दिए गए अधिकार। दया में नमी रख दी है बच्चों के आंखों में और वह कहता रहा मानवता की, दया की और शक्ति की जो बातें भुला दी गई थीं उनके उत्साहित करने पर। जागता है मनुष्य, रोती है धरती। जागता है मनुष्य, रोती है धरती। रक्तपात से लड़खड़ाते हैं पेड़। मछली मरती है स्वांग भरने की। सूर्य छिपाता है बादलों के पीछे। सूर्य छिप जाता है बादलों के पीछे। जागता है मनुष्य पर इंसानियत नहीं। और एक दूसरी कविता है सपनों की दुनिया। ले चलो मुझे वहां मीता जहां जी, कविता सहर को हाँ सहर को बोलो। फारसी का पढ़ने दीजिए पहले। अच्छा Yeah. Over to you, Sahar, for a dreamy world. Thank you, dear Mita ji, for your beautiful translation. The third is named Dreamy World.
جهان رؤیایی مرا ببر به آنجا که شعرم نمیبرد، به آن دور دست دلانگیز رؤیا که تمام پرندگان آزادند و قفس واژه‌ای نامأنوس که در هیچ فرهنگ لغتی یافت نمی‌شود، به همان جا که وطن به وسعت دنیاست و تمام خطوط روی نقشه خط خطی شدند، همان دور دست نزدیک که پروانه سیاه همانقدر زیباست که سپید، آنجا آن سرزمین رؤیایی که مهربانی کلام آغازین صبحگاه است و عشق از تمام رودهایش جاری است، همان جا که من و تو برادریم و هیچ سلاحی متولد نمی شود و خشم و نفرت موجوداتی ناشناختند. دستانم را بگیر و ببرم به سرزمین زیبایی که در آن سرود صلح، دوستی و برابری از تمام عبادتگاه‌هایش طنین انداز است. مرا ببر به آنجا که شعرم نمیبرد. Mita ji, a translation. अंग्रेजी का थोड़ा सा उसका बता दें, क्योंकि उन्होंने जिस भाषा में पढ़ा है मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा वाला पढ़ना है। हाँ, उसी को, वो सपनों की दुनिया। अच्छा, ओके। सपनों की दुनिया, इस कविता को मैं पढ़ रही हूँ जरूर, लेकिन इसका अनुवाद डॉक्टर उषा रानी राव ने किया है। सपनों की दुनिया, ले चलो मुझे वहां जहां कविता भी न जा सके, ले चलो मुझे वहां जहां कविता भी न जा सके, उन खुशनुमा सपनों में जहां आजाद है चिड़िया, पिंजरा एक अज्ञात शब्द है जो किसी शब्दकोश में न मिले, जहां मातृभूमि विस्तृत है ब्रह्मांड से, नक्शों की लकीरों में कर दी गई है रेखांकित, पास में ही बिखरा है काली तितली का सौंदर्य, दया की किरणों से होती है सुबह जहां, और प्रेम प्रवाहित हो नदियों में, मैं और तुम भाई हैं, कोई शस्त्र जन्मा ही नहीं अब तक, क्रोध और घृणा अनपहचान है, अनपहचान नहीं है या अनजान है, पकड़ कर हाथ ले चलो मुझे अब से सपनों की दुनिया पर, जहां से गूंजती है शांति, समानता और दोस्ती के गीत मंदिरों से। Thank you, dear Mitaji. The last poem is named How Little Is This for Opportunity to Live. اندک فرصت زیستن، چه اندک است این فرصت زیستن و چه کوتاه است این عمر، برای با تو بودن، برای دوستت داشتن و تو نمیدانی وسعت دوست داشتنم را، که اگر عمر همه موجودات را هم به من بدهند باز هم کم است، چه عاشقانه میخواهمت، غنیمت میشمرم تمام لحظات بودنت را. It is an love poem. Hindi translation, please. Thank you, Sahar. Mita ji, Thanks to you. इंग्लिश वाला बताओ। how little opportunity, ऐसा शुरू Yes. होता है. Yes. पर वह तो नहीं है इसमें। कोई बात नहीं. नहीं है वाला। Okay. कितने, वो नहीं आया मेरे पास। It's okay. I will read the English translation if it's all right. Okay. Yeah. Yes, you read. Give me one Don't waste second. time. Yes, read I have English translation. translation if you like to read. Yeah, you read, please. Sahar, you read. Just one moment. Take it. Sorry.
How little is this opportunity to live, and how short is this life to be with you, to love you. And you don't know the extent of my love, that even if the life of all creatures is given to me, it is still less. How romantic I want you. I count as a spoil all the moments of your bank. Thanks everyone for listening to my poems. Thank you. Thank you, Sahar, for the beautiful Persian rendition. Your voice is beautiful, you're beautiful. Everything is Thank you, it's beautiful. my pleasure. Thanks for your Thank sweet you. words. Now I would like to call on stage Vandana Tete. Vandana ji is an Indian tribal writer, poet, publisher, cultural activist, and a strong advocate for the tribal philosophy Adivasiyat. Her literary works are focused on Adivasi philosophy. Through lectures and writings on Adivasi culture and philosophy, she is contributing to and expanding the field of Adivasi studies. Her published works include Adivasi Darshan or Sahitya and Adivasi Darshan Kathaएं, a collection of tribal folk tales. She also has several poetry anthologies, including Konjoga, to her credit. She has been awarded by the Government of Jharkhand for her contribution to tribal literature and has received the Senior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India. Vandana ji, namaskar. Over to you. इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल कृत्या में शामिल मेरे सभी साथियों को जोहार। मैं हिंदी में कविता पाठ करूंगी और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन संताल स्टोरी राइटर जो है सुंदर मनोज हेम्ब्रम वो उन्होंने किया है, जिसे यहाँ पर वैष्णवी प्रेजेंट करेंगी। मैं शुरू करती हूँ मेरी पहली कविता। हम कविता नहीं करते, हम कविता नहीं करते, अपनी बात कहते हैं। जैसे कहती है धरती, आसमान, पहाड़, नदियाँ। जैसे कहते हैं कुसुम के फल, महुआ के फूल, जामुन की गंध, कटहल की मिठास, अभी अभी पैदा हुआ जीव और जंगल की सनसनाती हवा। हम गीत नहीं गाते, मैना की तरह कूकते हैं, मेमनों की तरह मिमियाते हैं, मेंढकों की तरह टर्राते हैं, बारिश के जैसा धीमे धीमे महीनों गुनगुनाते हैं और हाथी मामों के जैसा बस एक दो कड़ी बोलते हैं। हमारी कविताएं और गीत धूप की तरह हैं, हमारी कविताएं और गीत धूप की तरह हैं, जिनका रूप सौंदर्य कोई शास्त्री नहीं, प्रकृति का विराट साया निरखता और गुनता है। वैष्णवी। Thank you, वैष्णवी Vandana जी, ji. हिंदी ट्रांसलेशन। हाँ, I will read now. हम कविता नहीं करते. English translation. We do not do poetry. We do not do poetry, but we do tell our story. As the earth does, as the sky, mountain, and rivers tell their stories. As the fruits of kusum, the flower of mahua, the aroma of black plum, the sweetness of jackfruit, a newborn creature, and the gusty winds of forest tell their stories. We do not sing songs, but we do coo like Mina, we do bleat like a lamb, we do croak like a frog. For months we patter on like the rain, and like the elephant's uncle, we do speak couple of harsh words. Our poetry and songs are like sunlight, whose beauty is not that scholarly, but the grandeur reflection of nature, ever purifying and absorbing. Thank you. थैंक यू वैष्णवी। मेरी दूसरी कविता है कविताओं वाली नदी। अब अब भी कभी मन चाहता है कविताओं की नदी में डूबती उतरती गोते लगाऊं। अब भी कभी मन चाहता है कविताओं की नदी में डूबती उतरती गोते लगाऊं। पहाड़ों की ढलान पर गाती हुई उतरूं, जटंगी के खेतों में पीली फ्राक पहने छुप जाऊं और दादा से कहूं ढूंढो मुझे।
पके जामुन से रंग लेकर जब बादल पहाड़ों से सहिया जोड़ने चले, पके जामुन से रंग लेकर जब बादल पहाड़ों से सहिया जोड़ने चले तो उन्हें गले मिलते देखूं। पर कैसे करूं, पर कैसे करूं मैं पूरी अपनी चाहना। कविताओं वाली नदी सूखने लगी है, गीतों के पहाड़ उजाड़ हैं, हिंडाल्को की माइंस खुदी है, सूख गए हैं पोखरे। बादल पहाड़ों से आंख चुरा रहे हैं और जंगल से गुजरती हुई हवा गुनगुनाना गुदगुदाना भूल गई है। बादल पहाड़ों से आंख चुरा रहे हैं और जंगल से गुजरती हवा गुनगुनाना गुदगुदाना भूल गई है। बस फुसफुसाती हुई न जाने क्या कहती है कि मन अंदेशे से भरे दह में डूबता उतरता है। बस फुसफुसाती हुई न जाने क्या कहती है कि मन अंदेशे से भरे दह में डूबता उतरता है। और कविताओं की नदियों में डूबने की इच्छा बंदूक के बटों और बूटों के नीचे कराहती रहती है दिन रात। वैष्णवी जी। Thank you, Vandana ji. The river of poetry, Kavitaon Wali Nadi. Even now, sometimes my heart wants to dive and sink into the river of poetry, to get down through the slope of hills into the field of Jatangi. Wearing a yellow frock and hiding myself, I would ask Dada to find me. Borrowing colors from the ripe blackberry, the clouds travel to the mountains to make friendship. I'd love to see them hugging each other, but what can I do to fulfill my wish? The river of poetry is drying rapidly. The hills of song are desolate. The fields of Jatangi are dug for Hindalco mines. The ponds are dried, the clouds are avoiding the hills, and the passing winds of the jungles have forgotten their soft humming. They are only whispering. They are telling us something. Fear sinks into the depth of my heart, and my desire to sink into the river of poetry groans under the barrel of guns and the military boots heard night and day. Thank you, Vandana ji. चिंतित हूँ और उदास भी कि छूट रही हैं मेरे बच्चों से बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी दुनिया जिन्हें वे शायद ही जान पाएं। बंद कमरे में आंखें खोलते ही टीवी, कंप्यूटर, नेट की दुनिया में वायर के जरिए आती सूचनाओं और रंगीनियों के अभ्यस्त होते मेरे बच्चों की उंगलियां रिमोट, माउस और मोबाइल के बटनों पर खेलती थिरकती हैं और बंद कमरे में सारे मौसम गुजर जाते हैं और बंद कमरे में सारे मौसम गुजर जाते हैं। बंद कमरे में मालूम है उन्हें मौसम की खबरें, देश विदेश, मानवों दानवों एवं जानवरों की जानकारी। बंद कमरे में मालूम है उन्हें मौसम की खबरें, देश विदेश, मानवों दानवों एवं जानवरों की जानकारी। पर नहीं है उन्हें पता कि पहली तेज बारिश का पानी जब सूखी नदी में उतरता है तो अपने आने की सूचना कैसे देता है। और पातर काका क्यों जूते बैलों को तोतोरे नोनोरे कहते हैं। पथराई धरती क्यों सौंधी महक से लबरेज हो जाती है। सच में मैं चिंतित और उदास हूँ। सच में मैं चिंतित और उदास हूँ कि नहीं जान पाएंगे मेरे बच्चे डोरी कुसुम से तेल निकालने की देशज तकनीक। महुआ लट्ठा इमली के बीज के साथ औटाया गया खाने का स्वाद नहीं जान पाएंगे। सरहुल पर्व से पहले जंगल के फल फूल करम के बाद खेतों में खड़ी भेलवा टहनियों का राज। आह, नहीं जान पाएंगे मेरे बच्चे। नहीं जान पाएंगे मेरे बच्चे कुली बुढ़ी, सनई फूल और चूहे की कहानी। नहीं जान पाएंगे मेरे बच्चे बारिश से पहले क्यों चींटियां अपने अंडे लिए भागती हैं। नहीं जान पाएंगे पाड़ू, दुरंग, ठड़िया, लहसुआ के बारे में और बोरोका
पेछौरी करिया पड़िया के बारे में नहीं जान पाएंगे। टैटू तो हैं पर गोदने खो गए। गोबर से लिपे आंगन में चांदनी रात में या कि बोरसी की आग के पास नानी दादी से कहानी सुनने का मजा, आग में पके शकरकंद और मछली का स्वाद नहीं जान पाएंगे। आह आह, कितनी कितनी सारी जानकारियां छूट जाएंगी हमारे बच्चों से, क्योंकि नहीं लिखी गई हैं किताबें, इन पर नहीं बने हैं सॉफ्टवेयर और नहीं रहे अब धुमकुड़िया गित्ती ओड़ा गीताचारी। क्योंकि नहीं लिखी गई हैं कोई किताबें, इन पर नहीं बने हैं सॉफ्टवेयर और नहीं रहे अब हमारे धुमकुड़िया गित्ती ओड़ा गीताचारी, और इसलिए छूट जाएंगी चीजें मेरे बच्चों से, छूट जाएगी एक बड़ी दुनिया हमारे बच्चों से। धन्यवाद वैष्णवी। धन्यवाद वंदना जी, आभार, आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। Thank you so much. Now I would like to call upon stage Maria Miraglia. Maria is an educationist, poet, translator, and a peace activist. She has been a long-time member of Amnesty International. She is the founder of WPF, the World Peace Foundation, and a founding member and literary director of the Italian Literary Association Pablo Neruda. She is also a member of ICANN, the International Observatory for Information and Human Rights. She is an advisory member for many editorial boards. Her poems in Italian and English have been featured in a variety of reputed poetry anthologies. Her poems have also been published in numerous national and international newspapers and magazines. Some of her poems have been translated into international languages such as Spanish, Turkish, Azerbaijani, and Arabic, etc. She has been bestowed with national and international awards. I welcome you on stage, Maria. Over to you. To participate to this beautiful event, and I please receive my greetings from Italy. I'm going to read my two first poems in Italian, and if you like, I could read them in English too. You have to decide. Tell me, please. At the moment, I begin reading the first poem, whose title is An Angel. Un angelo che passa. This is the Italian title of these verses. Capiranno gli uomini, si chiede un angelo facendo un lungo volo sulla terra. Quanta importanza ha una stretta di mano, un abbraccio, un bacio, ma anche solo una pacca sulla spalla. Poi guarda giù, le strade sono deserte, i parchi vuoti, vede la gente chiusa nelle case, a cosa penseranno, si chiede ancora l'angelo. Sapranno approfittare della lezione quando tutto sarà finito o torneranno a lottare tra di loro. This is the first one. The title of the second poem is Aquila Reale. Vorrei essere un'aquila reale, volando nei cieli, spargere polvere di pace su case e palazzi, castelli e manieri, in villaggi remoti e in grandi città. Vedere la gente svegliarsi lieta al mattino, scambiare sorrisi, celebrare la fratellanza, dividere il loro pane e brindare all'amore universale. If someone wants to translate them into English, or I may do this, please tell me. But we will be reading the Hindi translation for these. The Angel Passing By and Golden Eagle. So we have Hindi translation prepared. Yes. And a golden eagle. In English, a golden eagle. Yes, golden eagle. जी, इनकी कविताओं का अनुवाद जो है वो डॉक्टर उषा रानी राव ने किया है,
और मैं उनके बिहाफ में पढ़ रही हूँ। पास से गुजरता फरिश्ता, पहला कविता। लंबी उड़ान भरता हुआ एक फरिश्ता देखते हुए पृथ्वी की ओर सोचता है, क्या मनुष्य कभी समझ पाएगा कि कितनी जरूरी है हाथ मिलाना, गले लगना और चुंबन देना, या फिर थपथपाना किसी की पीठ को। कौतूहल से देखता है वीरान रेगिस्तान को, खाली पड़े पार और घरों का घर में कैद होना। वे क्या सोच रहे होंगे, पूछता है वह अपने आप से। सब खत्म होने के बाद क्या वे कोई सबक ले पाएंगे, या फिर पलट कर लग जाएंगे लड़ने एक दूसरे से। अब मैं गोल्डन ईगल का अनुवाद पढ़ रही हूँ। उसका भी अनुवाद डॉक्टर उषा रानी राव ने किया है। सुनहरा उकाब। मैं सुनहरा उकाब हूँ, आसमान में उड़ने वाला। मैं सुनहरा उकाब हूँ, आसमान में उड़ने वाला। घरों पर, महलों पर, दूर दराज गांवों पर और बड़े शहरों पर अमन की गर्द बिखेरता हुआ सुबह सवेरे लोगों को खुश मस्त देखकर मुस्कुरा देता हूँ। बदले में मुस्कुराहट के, भाईचारा और रोटी को साझा कर मनाता हूँ जश्न दुनियावी इश्क का। थैंक यू। Thank you. But someone is going to read them into English, or I have to go on reading in Italian? You will read the other poems in Italian and I will read the English. Okay. The title of this poem is A Messenger, and it was written for Nelson Mandela. Cambiamo l'ordine delle cose e leggiamo i messaggi dal cielo nel giusto modo, non più medaglie per gli eroi di guerra, commisurato il loro coraggio al numero dei morti, non più violenza né morte per conquistare libertà e giustizia, non più bombe né distruzioni o pianti, ma parole di pace, tolleranza e integrazione. C'era un uomo sulla terra che mostrò alle genti la via, un messaggero inviato dal cielo, il suo nome Nelson Mandela. The next one is titled One Nation. Una nazione. Non desidero più vedere parate militari, gente che celebra giorni di indipendenza, bandiere colorate sventolare su scuole e palazzi, castelli e manieri, ascoltare inni patriottici e lodi al valore dei soldati. Tanto più grande il loro coraggio, tanto di più il sangue versato. Possano mani sapienti offrire medaglie d'oro ad uomini che anelano alla pace, oggi e sempre. Cancelliamo dalle menti e dai libri di storia gli eroi di ogni guerra, oggi e sempre. Ogni nazione un pezzo di un mondo comune, di un pianeta sospeso nel vuoto infinito, tutto intorno lo spazio scuro. Sia il nostro sogno comune un'unica nazione, un popolo solo, la nostra comune bandiera, il cielo, la nostra nazione comune, il mondo. The last one is titled Lost Lives. Vite perdute in acque scure, corpi senza nome, allineati lungo la battigia, diversi i colori della loro pelle, delle loro fedi, delle loro credenze,
uniti ora in un destino comune. Smorfie di dolore tra gli astanti, che svaniscono come i colori della notte alle prime luci dell'alba. Uomini e donne, in terre lontane, aspetteranno ancora barche, affronteranno ancora mari remoti, moriranno ancora lungo il loro straziante calvario verso la speranza. E i campi di concentramento sono ancora là, luoghi spettrali dove puoi ancora sentire i gemiti dei tanti vittime della follia umana. Le bombe su Hiroshima e Nagasaki non sono lontani ricordi. I fumi dei corpi bruciati si sentono ancora nell'aria. E tu, ed io, e noi, ciechi e sordi, dinanzi alle miserie umane. I finished my Italian reading. Thanks. Thank you, Maria. I will read the English translation now. So, Please. English translation for A Messenger. To Nelson Mandela. Let's change the order of things and read the messages from heaven in the right way. No more war heroes to give medals to, no violence nor death or bloodshed. To gain freedom and justice, no bombs nor destruction, no cries, but words of peace, tolerance, and integration. There was a man on earth who showed peoples the way, a messenger sent from the sky. His name was Mandela. That was a messenger. Now I will read the translation for One Nation. I wish to see no longer military parades, people celebrating Independence Days, colored flags waving over schools and palaces, manors and castles, hear patriotic hymns and people's praises for soldiers' valor. At the greater their courage, the more the bloodshed. May wise hands reward with gold medals, men fighting for peace today and ever. Let's all remove each war's hero from history books and minds of men. Each nation a piece of a common world, of a planet suspended in the endless void all around, the space unknown. Let's all dream, one nation, one people, our common flag, the sky, our common nation, the world. That was One Nation. Now this will be the last poem by Maria, Lost Lives. Lives lost in dark waters, nameless bodies lined up on the shore, unalike the colors of their skins. Their faiths, their beliefs, united now in a common doom. Grimaces of pain among the bystanders vanishing away, like the dark colors of night. At the first light of dawn, men and women in far lands still wait for boats, still will face remote seas, still will die along their harrowing cavalry towards hope. And the concentration camps are still there, spectral places where you can still hear the moans of thousands of people, victims of the human folly. The bombs on Hiroshima or Nagasaki are not far memories. The fumes of the burned bodies can still be smelt in the air, and you and me and we, blind and deaf in front of the human miseries. Thank you, Maria. Your poems are filled with the urge to walk. For your wonderful reading. Thank you. Thank you. Thank you, Maria. Your poems are filled with the urge to walk towards peace and leave behind the violence. And I feel this is very much needed to be addressed. Thank you. Dear friends and all our viewers, this session is coming to a close now. I would like to thank all of our distinguished poets for this enriching experience. It was a pleasure knowing all of you and having the opportunity to hear your poetry through kritya2021. And to our viewers, thank you for joining us today. This is the first day of a 13-day-long poetry festival. I hope to see you all in the next session, 5th July at 6 p.m. India time. Thank you all, and thank you, Ratiji, for giving me this opportunity. Thank you, all of you, all the poets who came from different countries like Ghassan, Sahar, and Maria, 3 different languages, along with our talented young poet Medha and our
very, very talented, and our senior poet, Vandana Tete ji. Thanks to you. Thank to Vaishnavi Rao for such a wonderful presentation and such a wonderful moderation. Thanks to you, and thanks to poetry. Long live poetry and long live peace.